Okay, so last time in our class we read about what is solubility. So solubility regarding, I guess everybody is clear, that is the amount of solute which is present in the required amount of the solvent, which is again depending on two things. One is temperature and another one is pressure, right? So from that class I'm continuing with this, that how the solubility is changing according to the solute and the solvent. So for now I have taken the topic solubility of solid in liquid. Now here solid is the solute and liquid is the solvent. So how it is getting affected by the temperature and pressure, that is what I am going to teach you. That is effect of temperature. So solubility will always decrease with increase in temperature whenever you have an exothermic cases. So exothermic cases means you have enthalpy greater than 0, or you can say that in exothermic cases there is an evolution of heat, and thus when you increase the temperature, maximum particles goes out of the solution in the form of the vapor, and thus the solubility is decreasing. But when you go to the saturated solution, there dissolution process is happening, where dissolution means some of the amount of the solute is getting dissolved in the solvent. Thus that process will always be endothermic. Endothermic means most of the dissolution cases you won't be having any heat liberation. That's why solubility will increase. It means जितना हम डालते जाएंगे उतना डाइसोल्यूशन होता जाएगा, एंड उस वजह से solubility भी बढ़ता जाएगा. नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर. अगर आप सॉलिड और लिक्विड की बात करें, हम हर एक क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि सॉलिड और लिक्विड उतना कंप्रेस नहीं हो सकता जितना गैस हो सकता है बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर. तो सिंस ये दोनों ही चीजें इस फैक्टर के वजह से हम इनकी कंप्रेसिबिलिटी के रेस्पेक्ट में हम इनको ले नहीं सकते, तो इनकी सॉलिबिलिटी भी हम इसी के रेस्पेक्ट में यही समझेंगे दैट this effect of pressure is mostly not at all applicable when you talk about solubility of solid in liquid, right? Next is solubility of gas in liquid. So when I talk about gas in liquid, it means gas is the solute and liquid is the solvent. So when I increase the pressure, that is for example एक beaker में मैंने solution लिया जिसमें solution में एक solvent है एक solute है. यहाँ पे solute मैंने gas डाला और solvent मैंने liquid डाला. तो जब आप इसका प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर कैसे बढ़ाते हैं, पिस्टन से बढ़ाते हैं. जब हमने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा था, देयर वाज अ थियरी कॉल्ड डाल्टन्स लॉ ऑफ प्रेशर. सो इन दैट केस अगर हम प्रेशर पिस्टन से थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाएंगे, व्हाट विल हैपन, गैस धीरे 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 उसके अंदर जाता जाएगा लिक्विड फेस में. और अगर हम इसमें डायनेमिक इक्विलिब्रियम लाते हैं, दैट इज जितना गैस पार्टिकल उस सॉल्वेंट में जा रहा है उतने ही गैस पार्टिकल अगर उस सॉल्वेंट से बाहर जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोथर्मिक, तो उस केस में डायनेमिक इक्विलिब्रियम आता है. तो तब अगर हम प्रेशर का रोल देखें तो जितना आप प्रेशर बढ़ाओगे मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर पार्टिकल्स विल गो इनटू द लिक्विड. Thus, solubility of the gas in liquid is directly proportional to the pressure applied. Right? So, इसी concept के respect में Henry was the scientist who gave one law जिसने उसने solubility की बात करी gas in liquid with respect to the pressure. नाउ प्रेशर अगर आप बात करोगे, एक होता है टोटल प्रेशर, एक होता है पार्शियल प्रेशर. पार्शियल प्रेशर कब होता है, जब हम एक ही एक गैस की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स लॉ, right? So that's why Henry's law states that solubility of gas in liquid at a given temperature that is directly proportional to the partial pressure of the gas. And हम पहले ये पढ़ के आए डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग दैट सॉल्युबिलिटी की अगर आप बात करो वो एक तरीके का एप्लीकेशन या एक तरीके का फंक्शन है पार्शियल प्रेशर का. तो अगर हम पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे तो हम हर किसी के एक मोल्स की बात करेंगे. तो मोल्स अगर कंसिडर करेंगे तो मोल फ्रैक्शन भी आएगा. सो अगर हम ये कंसिडर करें कि अगर सॉल्युबिलिटी पार्शियल प्रेशर का फंक्शन है तो मोल फ्रैक्शन कैन आल्सो बी कनेक्टेड विद सॉल्युबिलिटी. Why? Because you have different moles of the components in the solution. So therefore, if I take the partial pressure, then partial pressure is directly proportional to the mole fraction of the gas. And if I remove that proportionality, you have a term called Kh, which is Henry's constant, right? Now this is the expression of Henry's law. That is, the partial pressure of the individual gases is directly proportional to the mole fraction of the gas,
And दूसरा definition हमारा ये है, that is according to the solubility. Okay, so in the last one, we continued with the Henry's law, where I told you that the partial pressure is directly proportional to the mole fraction, and if I remove that proportionality, you can see a constant, that is kh. Here h is representing that it is Henry's 1. Now if I see this Henry's 1, then I can plot a graph between the partial pressure and the mole fraction of any gas. It can be an oxygen gas, it can be a nitrogen gas. What you see is, at a specific temperature, or you are increasing the temperature minutely, you can see there is a straight line graph which is being coming between the partial pressure and the mole fraction. So this straight line is the slope which is giving you the value of Henry's constant, right? So from this you can see that the Henry's constant is increasing with the increase of temperature. It can be a 2 degrees Celsius increase, or it can be a maximum of that, but then if I start with the minimum, then kh is increasing with the temperature. So thus, as I told you, if this with the temperature, if this Henry's constant is increasing, then I already have told you that the solubility will always decrease with increase in temperature. Thus, by correlating these two terms, I am giving you a simple direct method, that is, this Henry's constant is inversely proportional to solubility. So whenever you have a connective question regarding this, you can always remember this to understand that how solubility is connected with the Henry's constant, right? So hope so this expression is clear with you, and how what is connected with each other, that you should be clear with by this method, right? Now next is where this law is being used, because everything has to be having some application. So if I see the Henry's law application, this is again connected with the pressure. तो the simplest example is, किसी भी आप सॉफ्ट ड्रिंक्स को ले लो, वो ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं. वो क्यों पैक्ड होते हैं? क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, जिसकी सॉलिबिलिटी को बढ़ाने के लिए मैक्सिमम प्रेशर लगा के उसकी पैकिंग किया जाता है. बट जैसे ही आप उसको अगर आप खोल दोगे, सारे गैसेस इमीडिएटली बाहर आ जाता है, क्योंकि वहां पे उस गैस की सॉलिबिलिटी कम हो रही है उस सॉल्वेंट में, राइट? सो नेक्स्ट वन इज a problem which is known as a bend, right? Then how it happens? Most of the scuba diver, they always stay inside the water, right? और वो ज़्यादा जितना डीप जाते हैं वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है. बट जब जैसे ही वो थोड़ा सा बाहर आते हैं, वहाँ क्या होता है, प्रेशर जैसे ही ऊपर आती कम हो जाता है, तब जो भी गैसेस सबसे डीप में थे वो कहीं ना कहीं ब्लड के साथ मिक्सअप होके वो कैपिलरीज को ब्लॉक कर देते हैं. तो जिसकी वजह से जब वो थोड़ा ऊपर आते हैं बाहर की तरफ, तब नाइट्रोजन गैस की जो बबल्स है वो उस फॉर्म में बाहर आती है, एंड दस the person may die. So that's why जितने भी स्क्यूबा डाइवर्स जो टैंक्स अपने साथ लेके जाते हैं, उसमें some minimum amount of helium, that is 11.7%, उसको मिक्स करके डाइल्यूट किया जाता है apart from other gases, so that this capillary blocking doesn't happen whenever they go inside the water, right? Next application is anoxia. Now anoxia, when it happens, जब भी हम हायर एल्टीट्यूड्स में जाते हैं प्रेशर कम होता है. अगर आप प्रेशर कम होगा तो ऑटोमेटिकली यू कैन नॉट ब्रीथ द गैस विच इज प्रेजेंट देयर. सो ऑटोमेटिकली व्हाट विल हैपन, द पर्सन मे get ill, right? So in that illness he may be unable to think, because most of the our system is being run by the oxygen gas. So that's why most of the people who are going for mountaineering or for any purpose at the higher altitude regions, वो ज़्यादातर अपने टैंक्स में they fill that oxygen gas and they go to the higher area, right? So the disease which is coming out if the pressure is low, that is anoxia. So that is anoxia. So we have read about Henry's law. So now I like to explain one numerical based on that formula, so that you will understand that how that formula will be used for numerical purpose. From that topic you will get the definition, but surely you will get one numerical based on it. For example, I have taken in-text question 2.7. This you do see the question. In that you have been given the Henry's constant value, but it's not in bar but in Pascal. So, and pressure is given in the term of atm. So convert either one of them, and I'm converting that pressure into Pascal by multiplying 101325 value in terms of Pascal, right?
Then I'm writing the formula, that is pressure of partial pressure of carbon dioxide is equals to Henry's constant multiplied by mole fraction of carbon dioxide. इस क्वेश्चन में अब अगर आपको शुरू में ही हेनरीज कांस्टेंट और पार्शियल प्रेशर दिया है तो वहाँ से हम क्या निकालेंगे, हम वैल्यू निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ देयर. आई हैव सॉल्व दैट वैल्यू. नाउ अगर हमारे पास मोल फ्रैक्शन है, हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, हमें अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है. अमाउंट इज ऑलवेज रिपोर्टेड इन ग्राम, यानी कि हमने मास निकालना है. और क्वेश्चन में ये दिया है कि 500 ml of the solution. Now in the question if you see, you have a solution where there is carbon dioxide, but किस में आप डिजोल्व करोगे, एक लिक्विड में you are dissolving it, that has to be water. So the 500 ml value which is given in volume, that is basically 500 gram of water is present. So that's why I have taken that given mass of the water as 500. Molar mass, you know, it is 18 and I'm getting the value 27.7. नाउ जब आप मोल फ्रैक्शन का अप्लाई करते हो, मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस मोल्स ऑफ वाटर. अब ये डिनोमिनेटर में हम कार्बन डाइऑक्साइड की मोल्स क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम गिवन मास को 1 ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और मोला मास इसका होता है 44, 1/44 जो आंसर आएगा वो 0 पॉइंट वैल्यू में आएगी, जो बेसिकली वाटर के मोल से बहुत कम है. तो जब ऐसा होता है तब हम डिनोमिनेटर में मोल्स ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको नेग्लेक्ट करते हैं एंड सिर्फ वाटर को लेते हैं. तो जब आप ये वैल्यू पुट करोगे, यानी मोल फ्रैक्शन हमने कैलकुलेट पहले ही कर रखा है, वो डाला, मोल्स ऑफ CO2 डाला डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ वाटर. जब हम मोल्स ऑफ CO2 को खोलेंगे, गिवन मास अपॉन मोला मास, दैट आई हैव ओपनड इट, राइट. सो व्हेन यू ओपन दिस वैल्यू, सारे वैल्यूज को जब एक तरफ लेके जाओगे तो गिवन मास बन जाएगा मोला मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मल्टीप्लाइड बाय moles of water, which is coming around 1.854 gram, right. So hope so this question is clear with you. If you slowly substitute the values, you will understand how Henry's law formula is being used in any type of question. You just need to understand what is given in the question. Okay, as we have done the previous question, that was 2.7 in-text question. Now again I have taken the 2.6 in-text question. I'm just helping you to solve Henry's law based question so that you can try the back exercise question which I am giving you at the last of this numerical. Okay, so in 2.6 question you have been given solubility in terms of molality. Now 0.195 molality, what does that mean? 0.195 moles is present in 1 kg of the solvent, यानी कि 0.195 moles किसका है, H2S का है, क्योंकि solubility किसका दे रखा है, हाइड्रोजन सल्फाइड का. अगर 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट है, यानी 1 kg में 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट होता है, और सॉल्वेंट अगर कहीं कुछ मेंशन नहीं होता वो नॉर्मली वाटर ही होता है, यानी यहाँ से हमें ये पता चला मास ऑफ द वाटर इज 1000 ग्राम. So when you calculate the number of moles of water, that is 1000 divided by 80, you will get the moles of water. Then you write the formula for Henry's law in terms of hydrogen sulfide. Partial pressure of H2S equals to Kh into mole fraction of H2S. So at standard temperature and pressure, in this question we have not been given partial pressure value of H2S. So I am writing that value, it is at bar, it's STP, it is 0.987. So you got the pressure value. Now what you require? Mole fraction of H2S. That is number of moles of H2S divided by moles of H2S plus water. So I am substituting all the value. Now you may ask me that why I have taken in the denominator the moles of H2S, whereas previous question में मैंने उसको neglect किया था. यहाँ पे लेने का reason ये है कि ये solution में moles of H2S is somewhere a little bit concentrated. It's not at all too diluted. It is coming as 0.195 given. So 0.195 को अगर आप round off भी करते हो, it is 0.2. तो which is a little bit concentrated. इसीलिए मैंने इसको neglect यहाँ नहीं किया और यहाँ से मैंने एक्सप्रेशन निकाला मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S, राइट. अब ये एक्सप्रेशन को जब सॉल्व करूंगी यू आर गेटिंग सम आंसर 0.0035. नाउ ये मोल फ्रैक्शन की वैल्यू और आपका पार्शियल प्रेशर की वैल्यू जो मैंने दिया था, इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करो हेनरीज लॉ वाले फॉर्मूले में जो 1 दे रखा है. फ्रॉम दैट यू विल गेट द वैल्यू एज 282 बार. Sometime if you round off the values, it may differ in the answers, but yes,
अगर आप स्टेप वाइज जिस हिसाब से जितना डेसिमल ले रहे हो उतना ही डेसिमल हर जगह मेंटेन करोगे तो यू मे गेट द नियर बाय वैल्यूज, राइट? So kindly solve 2.6 and 2.7 in the classwork copy as I did on the board, and kindly try to understand how I have placed each and every value. Now, so till here I'm finishing, that is Henry's law, the basic concept, having the basic formula. Based on that, I'm giving you some homework, that is, kindly write that solved example 2.4 in your homework copy. Along with that back exercise question, do solve, that is 2.11, 2.12, 2.26 and 2.35. Whatever I'm saying as homework, it should be reported in the homework copy, and what I'm doing on the board, that all should be in the classroom copy. Thank you.